Good morning, students. Today we're going to start with our exercise 5. In this exercise, you have 3 numbers, those which you have to add. But here, the way we add them is a bit changed. What we're going to do is, first we are going to add this one and this one. First we're going to add these 2 numbers. So we get this, right? Now, since the arrow is marked from here to here, that means we have to carry this whole number here, like this. Now add them. Since you can see this is this next number, which was to be added, right? So first we have added these 2. Now to their sum, we're going to add this third one. हमने पहले इन दो को ऐड कर लिया है, इन दोनों को. अब इनका जो भी सम आएगा उसको हम यहाँ पे आगे फॉरवर्ड कर देंगे और उसमें हम जो बचा हुआ नंबर है उसको ऐड कर देंगे. ऐसे आप 3 स्टेप्स में ऐड करोगे, ठीक है. इससे आपके लिए ऐड करना इजी हो जाएगा. सो आफ्टर एडिंग व्हाट आर वी लेफ्ट विद हियर, लेट्स ट्राई इट अगेन. आपको ये लिखना है यहाँ पे 597. नाउ जस्ट ऐड देम. This is what you get. Now or means there is a choice to add in the other way, which is in the other way we can add 472 and 243. 472 and 243. First these 2 will be added. So we get this as an answer. Now arrow has been marked from here to here. That means we have to carry this number 715 right here. 715. Now this is the left one number, right? This one number was left. So it's being added to the sum of the other 2 numbers. It comes out to be 4 and 8. You can see in both the cases sum is same. This shows that order. What do we conclude from this? That order of the addenda. एडेंडा होते हैं आपके, जो आप नंबर्स को ऐड करते हो ना, इनको बोलते हैं एडेंडा. इनका प्लूरल होता है एडेंडा. सिंगल को बोलते हैं एडेंड, ठीक है. एडेंडा. ऑर्डर ऑफ एडेंडा डज नॉट अफेक्ट सम. इसका मतलब है जो आपका सम होता है, ये वाला सम, ये चेंज नहीं होता इस बात से कि आप पहले किसको ऐड कर रहे हो और बाद में किसको ऐड कर रहे हो. देखो यहाँ पे हमने 125 को 472 में ऐड करा और 243 को बाद में ऐड करा. यहाँ हमने 472 को पहले ऐड करा 243 के साथ. देन वी ऐड 125 टू इट्स सम. तो देखो उससे आपका आंसर सेम रहा. इट्स सेम 840 in both the cases. So that's what we have to show here. Now he is asking you, is the sum same? You are being asked, you have to conclude, is the sum same? Yes, sum is same in both the cases. It's 840 here, 840 here. So your answer is yes. Which one is easier? It's up to you. You can write whatever you want to write here, first one or second one. It's up to you. Otherwise both are equally easy. Okay, so let's move to this question. So in this question what we're going to do, now you have 3 addenda and it becomes a bit difficult for you to add them. जब आप 3 addenda देखते हो तो आपके लिए थोड़ा ऐड करना डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो आप उसको ईजी कैसे बनाओगे? हाउ टू मेक इट ईजी, जैसे हमने पीछे किया ही है अभी, द सेम वे. क्योंकि इनका ऑर्डर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. तो what we're going to do is, whether you're adding these first, then adding this one, or you're adding these 2, then you're adding this one, it doesn't change the sum. कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे. तो आप जैसे चाहो पहले कोई से भी 2 एडेंडा उठा लो, एनी 2 ऑफ योर चॉइस, कोई से भी, चाहे ये दोनों उठा लो, चाहे आप ये दोनों उठा लो,
और चाहे आप ये दोनों उठा लो, आपकी मर्जी है। पहले कोई दो उठा के उनका आंसर निकाल लो, देन थर्ड वन उसमें ऐड कर दो। सो लेट्स जस्ट सी इन ऑल द वे, हम सब तरीके से देखेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। First we can add 540 and 275. Let's see what their answer is. It's 5, 11 and 8, right? Now to this 815, we are done with these two. We are done with these two, right? Now this one is left. So we will add it here, like this. So this is what we get as a sum, final sum. So just write it here. We are writing here because I'm going to do this three ways to show you that order of the addenda doesn't change the sum. अभी हमने पहले 400 इसको कर लिया था, राइट? 540 एंड 275 को ऐड करा था। अब हम चेंज करते हैं ऑर्डर और देखते हैं हमारा आंसर सेम रहता है कि नहीं रहता। ओके, अदरवाइज वी हैव प्रूव दिस थिंग दैट इट डजंट चेंज द आंसर। पहले इन दोनों को ऐड करा था, अब और उठा लेते हैं। नाउ लेट्स चूज दीज टू। First add these two. Six, 8, 3. Now to this, add this one which was left, 540, and we come up with 926. So इस way को अगर आप follow करते हो, then you get the same answer. So let's try other way. अभी हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को ले लेते हैं। टेक दिस बोथ, ऐड देम, 540 and 111. Just add them, 156. Now to this 651, add this one which was left, 275. 275. Just add it. So here it's going to be 12, 1 here, and 9. You see, in all the possible situations, we got the same sum, right? So it doesn't matter which way you are choosing, which order you are choosing to add them.